some more breaking news on the broadcast. It's coming in from the valley where Mehbooba Mufti, the PDP chief, has questioned Prime Minister Narendra Modi's silence in Uttar Pradesh administration's order on Kawad Yatra. She said that it's unconstitutional and it is an example of the fear that they want to change the constitution. The Prime Minister should speak, she says, and clear if he endorses this. नहीं, ये तो पहले ही बयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्हें सबक नहीं सीखा। 350 से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने काम किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। My colleague Ishan Vani is joining us on the broadcast. Ishan, it's pretty unlikely that the Prime Minister weighs in on this. However, these reactions that are coming in by members of the opposition, this time by the PDP chief, it's pretty much on expected lines. Well, absolutely right. You know, they have time and time again asked response from Prime Minister whenever there have been certain controversies. But the BJP has mostly tried to remain silent on these issues. While we see that how Mehbooba Mufti has been, vocal about these issues, and how she has been trying to target the center, particularly saying that, if they would have come in a brute majority, then things would have been different. So yes, Mehbooba questioning that why is the Prime Minister silent on the issue, and there is an equal right that the Constitution enshrines to a person of every religion. Then why is this particular diktat or the order come out in the Uttar Pradesh? And she has pointed out the fact that the Constitution is supreme, and what Rahul Gandhi, she has endorsed actually Rahul Gandhi's statement that if they come with a majority, then they would change the Constitution. Mehbooba has also said that, fear of them changing the Constitution she has been talking about since the application of Article 370, that seems to be coming true. And now all these things, when they happen, the PDP has been saying that they have been proven right, and the implementations are right now happening on the ground. Right, Ishan, thank you so much for joining us with the latest on this story. And we were talking about political reactions that continue to pour in. Of course, the opposition is up in arms over the Uttar Pradesh government's latest diktats when it is about the Kawad Yatra. This time, it's the allies also not singing the same tune. Let's begin with KC Tyagi's reaction on this. इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। It's regarding the controversy surrounding the directive from the UP government on the Kawad Yatra. Now, not just in specific areas, but the entire route of the Kawad Yatra will have to display, the owners have to display the name. What is the stand of the Congress party? Our stand is very simple, that whose purpose does it serve?
What purpose and what business does the government have to stoke these communal tensions? How much are you going to divide the people of this country, and to what extent? At some point in time, you have to think about harmony. You have to think about bringing people together. But the BJP doesn't seem to learn a lesson. The reality is that you deeply divided people, you stoked communal violence, you stoked hatred, and the people taught you a lesson. You are 63 seats down in the Lok Sabha. You still haven't seen the writing on the wall. I mean, what difference does it make whether people display their names or not? If a doctor turns out to be a Muslim and he's the only doctor, are you going to get treated? If the only person willing to donate blood to you is a Muslim, are you willing to take his or her blood? So these are inane issues. And how are you going to decide if somebody places a name called Bablu or Munna? What are you going to do then? The reality is that all of this is being done in the name of religion, but the Hindu religion is very vast. These guys don't understand the Hindu religion. They don't understand the vastness of the Hindu religion. लोग ऐसा नहीं है कि यदि नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी हिंदू होटलों में भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बता देते हैं लोगों को, क्योंकि सब जानते हैं कांवड़ यात्रा और शिव भक्त। तो ये एक महान यात्रा है। इस महान यात्रा के आयोजन का उत्तराखंड को सौभाग्य मिलता है। उस सौभाग्य में ये दाग कहाँ से लगा दे रहे हैं? इसका सब लोग कांवड़ का स्वागत करते हैं। मैंने मुसलमान भाइयों को देखा है जो पानी लेकर के खड़े रहते हैं, हाँ, जो इसका स्वागत करते हैं, और कांवड़ी लोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। With that, we're slipping into a very short break, but